Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And it's fantastic to be live again on Friday at 5. थोड़ा सा टाइम चेंज किया, हम फ्राइडे एट 4 कर रहे थे, अभी फ्राइडे एट 5 है एंड दिस इज डायरेक्टली लाइव ऑन यूट्यूब. आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू इफ यू आर एबल टू see me, hear me out, आप देख पा रहे, सुन पा रहे, and you are able to understand what we are doing. If you can, then give a big thumbs up so that I know that you are able to hear me, understand me, and you are able to see whatever I am doing. So बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है दोस्तों कि मार्केट का जो मूवमेंट है लास्ट थोड़े दिनों में आपने देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट्स में गैप अप हुआ, 2 दिन में अच्छा रैली हुआ, देन गैप डाउन टुडे एंड शार्प करेक्शन ऑन द डाउन साइड. तो इस कारण से आप यहाँ पर देखेंगे पोजिशनली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा. पोजिशनली मतलब आपने पोजीशंस लेके रखी है, आप होल्ड करना चाहते हैं 4 दिन 5 दिन के होराइजन से, तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है. निफ्टी इज नॉट डूइंग मच on a net basis, but there is a lot of movement which is happening because of the gap. Majority of the movement over past in this entire week which has happened has been because of the gap. Do you agree with me on that, every one of you? The movement that is happening is only because of the gap. You are seeing all of those move. आज का भी जो movement था more than 200 points नीचे गया, ओपन होने के बाद में निफ्टी went all the way down, then consolidated 930 के आसपास एक लो बना. In the morning I have tweeted across that 930 is the time when Nifty can possibly form a low, then bounce back, try to attempt some gap filling activity, consolidate, and that's what happened during the day. Market gap down 930 के आसपास. See, when I talk about time, 930 does not mean exact 930 over. It can be 9:15, it can be 9:45. You need to give that leeway. People who understand time cycles and who have been a part of mentorship will appreciate what I am talking, because that's a time zone. So I'm talking about time zone, and that's what we saw, that around that time zone market formed a low and continued to go sideways throughout, with some buying emerging in the final hour. Do you agree with me on that? Every one of you, are you here with me? Are you understanding what I'm talking about? And are you able to understand, because we are live on YouTube? I just want to know from each one of you, how is the Josh today? Are you people excited to know what is the neo wave path from here? यहाँ से आगे क्या होगा? हमने एक लास्ट फ्राइडे को एक पाथ बनाया था. डू यू रिमेम्बर दैट, एनी वन ऑफ यू? कि हमने एक निफ्टी पे पाथ बनाया था जिसके बारे में बात की थी कि इस तरीके से निफ्टी शायद जा सकता है, and this can be possibly only a pullback and not a start of a fresh up move. This can be an X wave. Do you remember the reason why we talked about it, why we spoke about it, and how precisely Nifty? So I'm just searching for that chart which I have actually tweeted across. So let me open up my Twitter. वहां से मिल जाएगा वो chart, and let me just share it across very clearly. So let me now show across the screen where I talked about the path of Nifty, and Nifty behaved precisely as per that path, where we moved up, suddenly reversed back on the downside with a gap down, and it looks like यहाँ पर मार्केट शायद पॉज लेगा नीचे की ओर और वापस एक पुल बैक आ सकता है अगर निफ्टी वो पाथ के हिसाब से बिहेव कर रहा है. सो let me just share that. I'm just searching it across on my Twitter very quickly, and I'll share that path ahead with you all. हाँ ये रहा. And ensure guys you are following me on Twitter, because I keep tweeting a lot of things during the market hours also. This is my Twitter handle, this is my page, and this is the path जो हमने last Friday को साथ में derive किया था neo wave के basis पे. And look at the way precisely prices behave. यहाँ पर था, went up towards the 17,756 जो Gann resistance level है, and then started coming down. आज का जो लो बना was precisely around this gap area where we formed a low over here. So this movement of Nifty has been in lockstep fashion of the path जो हमने यहाँ बना रखा है. अभी देखना ये होगा कि क्या वापस एक अटेम्प्ट आता है जो मार्केट को 17,680 तक लेके जा सकता है, या आज का लो ब्रेक होगा.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मूवमेंट है निफ्टी का, ये रहा वो चार्ट, गैप अप एक्स कंप्लीटेड एंड दिस इज द डाउन. So this is, I call as the GPS of the market. Are you understanding? The GPS of the market is simply fantastic because it gives you the direction, it tells you the path, and it tells you how prices will behave. And look at it, the way it behaved. So let me go on to the practical chart now, and let me share across the same thing. Let me go on the chart here and talk about what I see is happening around in the market. And what is the wave pattern suggesting. उसके बाद में हम बात करेंगे wave pattern के बाद में. Then I will go and also talk about volume profile. बहुत ही सुपर वे से वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे हम, जहां पर बड़े प्लेयर्स ने कहां पर पोजीशंस बिल्डअप कर रखी है वो हम चेक करेंगे. सो लेट मी नाउ शेयर अक्रॉस माय ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन हियर, over here. Are you guys able to see the screen? Every one of you. On the trading view screen, are you able to see my chart that I'm showing it across over here very clearly? ठीक है, you are able to see this. So now यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे वेव पैटर्न की, नियो वेव की बात कर रहे थे. So let me clearly explain it to you. So यहाँ से कोई ट्रेंड कंप्लीट हुआ था which was a bigger degree wave. And since then this is a very overlapping fall with no direction, strong direction I would say, because जा तो नीचे रहे लेकिन every time it goes down there is a pullback also on the upside. You can clearly see that happening. So the first thing that you should be looking at in this chart is the wave count. So मेरा wave count क्या है if I have to show it across. So this was my diametric pattern which I have shown earlier. यहाँ से ये जो move आया था, this was an X wave. Pose this is again A, B, and this is possibly the C wave that we saw in a diametric followed by an X, और ये आ गया आपका flat corrective pattern. इसके बाद में ये जो move आया, this is again an X wave, and this move completed here. उसके बाद में अभी जो move आया है नीचे, this is wave A again. शायद A complete हो गया, that's my assumption, and we might have a B because time के हिसाब से ये परफेक्ट चल रहा है. बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट अ 55 days टाइम साइकिल, basis of which despite of this rise it was expected कि this is just an X wave and we should come down, which is bang on. And because of the 15-minute time cycle or shorter time cycle, this low should remain protected. If आज का लो 17,320 अगर ब्रेक होता है, then we will have 2 more days of selling pressure basis of the time cycle that I am following on a 15-minute chart. तो मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? If you check, we are trying to combine something very classic neo wave along with the concepts of time and trying to find out what is the possible path of the market. And उसी के बेसिस पे हमने डिराइव किया था जो लास्ट फ्राइडे को था. अभी का यहाँ से क्या मूड हो सकता है लग रहा है? This is again a path that I am deriving right now in front of all of you. Let me just do that. यहाँ पर से, if यहाँ पर से there is a possibility we might have a B wave, some attempt on the upside which can take prices towards this level or maybe little higher, looks like that, and then we might again start showing some kind of a correction in the form of C. So this is how it might form. That's one of the possibility looking like, but ये valid होने के लिए we should not break below 17,320 level, which is very very important. क्योंकि अगर ये लेवल के नीचे निफ्टी ब्रेक हो गया, then things might get very very tricky. So अभी तो ऐसा लग रहा है एक अटेम्प्ट गैप फिलिंग का हो सकता है, लेकिन ये अज्यूम्ड है कि डायमेट्रिक बना, फ्लैट बना और अब भी शायद ट्रायंगल बनेगा, ये अजम्पशन है. सो लेट्स सी व्हाट पैटर्न हियर इज फॉर्म्ड एंड व्हाई आई स्टिल थिंक 18,134 का जो लेवल था is not going to be taken out. So this is the level which we have talked about. This level should not be taken out for another cycle which is until 17th April तक. ये high ideal case scenario में नहीं निकलना चाहिए. This is basis of the 55 days time cycle. Do you guys remember the concept of 55 days time cycle?
जो मैंने लास्ट फ्राइडे को भी बताया था और वीडियोस में भी. सो गाइज हु आर देयर ऑन यूट्यूब, आर यू subscribing to the channel? Are you liking the content that we are putting it across? If yes, then do subscribe, share it across with your friends. Yeah, let everyone learn these concepts of wave theory, concepts of time. And ये simple है, easy है, and हर जन कर सकता है. I'm telling you. So don't worry on that. And let me just see a few comments that has come. Sunil, great to see you here, Sunil ji. The path ahead. And rate hike, how it is on 22nd March. बहुत टाइम है, तब तक तो मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा. रेट हाइक के चक्कर में तो आप रह ही जाओगे, बिकॉज मार्केट को जो करना है वो करेगा, रेट हाइक हो ना हो. मार्केट विल डू व्हाट इट हैज टू डू. डू यू एग्री विथ मी? सो देखो ना, पाथ हमने कब बना रखा था और अब जाके मार्केट बिहेव एग्जैक्टली वैसा कर रहा है. और इवेंट तो कुछ भी आ सकता है, राइट? इवेंट इन्फ्लेशन की बात हो जाएगी, वापस गिरने लगा तो अडानी की बात हो जाएगी. तो इवेंट एंड न्यूज कैन बी एनीथिंग. नाउ लेट मी मूव फ्रॉम दिस चार्ट टू अ very classic volume profile chart and show it across to you on volume profile कि क्या लग रहा है मार्केट में on the basis of volume profile. Where are we headed and what are the big players trying to do? So where is my screen gone of go charting? Let me just share that across quickly for all of you. This is something phenomenal, बहुत ही easy है. And participant from option trading program might be aware about this concept of volume profile. जो हमने किया था पहले ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम में, हम करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी क्विक वे कि ये क्या देख रहे हैं हम. डू यू रिमेंबर दिस चार्ट विच आई हैव ऑल्सो पब्लिश्ड ऑन माई वेबसाइट कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल है. ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज द एरिया where there is very high volumes, cumulative volumes that you can see is happening here. So इसे क्रॉस करना मुश्किल है, which is 17,884, 17,880 futures level. This is volume profile on futures level. Are you able to see this chart? Guys, are you able to see? I want it to be an interactive session. So ये देख पा रहे हैं आप चार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ on the basis of volume profile, every one of you? Okay. So यहाँ पर अगर आपने देखा होगा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है. अभी समझने की कोशिश करते हैं बड़े प्लेयर्स कर क्या रहे हैं इस लेवल पे. व्हाट आर दिस बिग प्लेयर्स ट्राइंग टू डू, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव, आर दे बेरिश, आर दे बुलिश? लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. नाउ इफ यू सी द ओवरऑल वॉल्यूम हैज हैपेंड एट दिस पॉइंट. आई एम गोइंग टू जूम इन द चार्ट नाउ and look at the volume activity which has happened at the current juncture level. This level 17,450 futures पे there is huge volume that has taken place. And look at this. So I'm just going to zoom out thoda sa. If you look at this volume, which is substantial, can you see this? Which is this candle compared to all the past volume. मतलब मेजर एक्टिविटी यहां पर होते हुए लग रही है. वेरी मेजर एक्टिविटी एट 17,450. और निफ्टी का जो आज का लेवल प्रोटेक्ट किया वो इस वॉल्यूम के आसपास से प्रोटेक्ट किया. सो इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा. यहां पर मेजर वॉल्यूम हुआ था इस दिन पे यहां पर मेजर वॉल्यूम हुआ था. एंड यहां पर मेजर ह्यूज वॉल्यूम्स आज के दिन में हुआ है. ह्यूज वॉल्यूम which is substantial, twice compared to any past volume that you are seeing on this chart. Do you agree with me on that, everyone? So iska kya matlab hai? Which means something here is happening for sure. Now is it an accumulation or a distribution? In terms of price action, we need to see what we have to see. We need a move above this gap area, which is 17,500 के आसपास है. 490 है बिकॉज ये फ्यूचर्स है, ये फ्यूचर्स लेवल है. सो अराउंड 17,450 स्पॉट लेवल पे. वंस वी हैव एन अटेम्प्ट ओवर हियर, देयर कैन बी अ वेरी शार्प राइज, सडन रश टुवर्ड्स दिस गैप एरिया. ओके, एंड देन इट माइट फिजल आउट. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी हियर ऑन अ वेरी क्लियर वे
is this level 17490 futures का and 17450 spot का is very crucial, 450 के आसपास। तो अगर निफ्टी वो निकालता है तो दिस विल बी लाइक एन एक्यूमुलेशन, ओके। लेकिन वो निकाल के 1 घंटा सस्टेन नहीं किया, मार्केट ब्रेक कर दिया लो, दिस विल बी द लेवल विच विल नॉट बी टेकन आउट इजीली देन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इफ बुल्स हैव टू फाइट बैक, दिस इज द टाइम, बट दे विल बी anyways not going to do much, okay? So their fight back is only going to be for 200 points, okay? That's how I am looking at the market. And from here if it goes up, then वहां पर देखेंगे क्या एक्टिविटी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंडे का फर्स्ट ओपनिंग आवर कैंडल देखना। फर्स्ट ओपनिंग आवर में ये लो अगर निकाल दिया, then sell and sell, keeping this point of control as your stop loss, and you can sell. If this goes up, then start selling put options or buy call options for that 100-200 points move that you can start seeing on the market. So this is a very simplistic way of seeing the market. Volume profile, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो कैंडल्स आप राइट में देख रहे हैं, इसे कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन टेक्निक है ये, बिकॉज वॉल्यूम्स के बेसिस पे आप देख रहे हो प्राइस में क्या हो रहा है। सो यू आर लुकिंग एट वॉल्यूम प्रोफाइल विच इज अ क्यूमुलेटिव ऑन द राइट हैंड साइड, एंड यहां पर आप देख रहे इंडिविजुअल वॉल्यूम प्रोफाइल ऑल्सो, मतलब इंडिविजुअल डे में कहां पर वॉल्यूम्स हो रहा है। दोनों चीज पे नजर डालनी है हमें, जिससे पता चले भाई क्यूमुलेटिव तो यहां पर वॉल्यूम हो रहा है और इंडिविजुअल डेज में कहां पर वॉल्यूम्स हो रहा है, वो हमें देखना है। सो लुक्स लाइक इफ नाउ आई हैव टू कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम प्रोफाइल, इट लुक्स लाइक बिग प्लेयर्स, बड़ी पोजीशंस जो थी उन्होंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहां पर ऑल द वे दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस है, जो 1-2 टाइम होराइजन के लिए बिग प्लेयर्स एक्टिविटी है, they are trying to buy the market on the dips. If these short term traders, big players of course, but short term traders जो 1-2 days के लिए या 3 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, if they give up now, then the big players who have distributed across 17,880 levels are going to get amazing move on the downside. So बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे यहाँ पर है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है मंडे को इधर साइड। दैट्स हाउ इट इज लुकिंग लाइक टू मी, सीइंग दिस वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट एंड लुकिंग एट द ओवरऑल कैंडलस्टिक। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, चलते हैं वापस से ट्रेडिंग व्यू पे, वेयर इज द चार्ट गॉन, यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द पैटर्न दैट वी आर सीइंग हियर। सो दिस इज द आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्स वेव हियर, जो हमने देखा था वेव थियरी से, दिस इज द फर्स्ट लेग, वेव ए नीचे अभी फिलहाल चालू है। ये अजम्पशन है कि शायद वेव ए कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है। हाउ टू यूज वॉल्यूम प्रोफाइल इन गो चार्टिंग, माय कलीग विल शेयर द लिंक, you might just want to register using that link, and then you might be able to see, because I have the entire version of go charting. So use that link. Let me just share it across, or you will find it in the description later on. That link you can possibly use for sharing it across later on. तो इस तरीके से लग रहा है मार्केट। अभी चलते खाली डेली टाइम फ्रेम पे 55 डे साइकिल को देख लेते एक और बार। आर यू गाइस फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, या सब ऊपर से जा रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार, ये क्या बात कर रहे हैं, मार्केट में करना क्या है, बाय करना है या सेल करना है, या समझ में आ रहा है आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ? आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल. Are you guys understanding this concept? Put it in the chat so that at least I know आपको समझ में आ रहा है and you are understanding. If that is the case, I'll extend it to explaining you the 55 days cycle as well. Okay, let me just very quickly open up that chart of 55 days cycle and कहाँ गया मेरा screen? So यहाँ पर 55 days cycle, are you able to see everyone? दिख रहा है 55 days का cycle? So every 55 days we expect markets to form a low, but there have been times instead of forming low, it just broke that level and then changes that, right? So यहाँ पर
इसने जो लो बनाया था बजट डे के वक्त, वो ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है। और इस कारण से हम बोल रहे हैं कि वो हाई नहीं निकलेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट, आई थिंक कितने दिन हो गए उस टाइम को, लेट्स जस्ट मेजर इट एंड चेक फॉर हाउ मेनी डेज, देन वी कैन से कि हाई नहीं निकलेगा। लेट अस जस्ट मेजर दैट low was formed approximately here. So we are already 25 candles away in the low. So approximately next 25 days, 25, 27 days, we should ideally not take out this high of the cycle. Now that's the concept from the time cycle. So in a nutshell, Monday ka movement is going to be very important. If we break 17,320, then we are definitely headed much lower, and 17,450 spot price is going to be a major hurdle because huge volume profile activity has happened there. और अगर हमने 17,450 spot पे क्रॉस कर लिया, 450, 480 levels हमने क्रॉस कर लिया, there will be an attempt back towards that 17,650, 670 levels. 200 पॉइंट का मूव हमें मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए. And this is the market where you have to now play shorter term because positionally trend हर 2-3 दिन में चेंज हो जा रहा है. So shorter term में देखना होगा. फिलहाल जो क्लोज है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे है. आज पूरे दिन में एक भी कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं हुई आवरली चार्ट पे. That's very interesting except the last 15 minutes which I will ignore. So these concepts of candlestick with time is very important. So guys, do you want to learn this in much detail? For many of you who are not being a part of these webinars that I am conducting, a series of webinars I am conducting one more tomorrow, which is 11th of March on a Saturday at 11 a.m. Do you want to be a part of that, where I'm going to talk about these concepts of time cycle along with the concept of कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक रूल्स जो आपको फॉलो करना है सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे. एंड दोस्तों, हमने बात की थी निफ्टी का एक लो बनेगा वेडनेसडे को 130 को, एग्जैक्टली वहां पर लो बना, पुल बैक आया 80 पॉइंट्स का. बात की थी आज ट्विटर पे, मैंने मेंशन किया था, कल भी मेंशन किया था कि 930 के आसपास मार्केट में लो लगना चाहिए डिस्पाइट ऑफ अ ह्यूज गैप डाउन एंड मूव ऑन द डाउन साइड. निफ्टी डिड टच दैट लेवल ऑफ ऑन द डाउन साइड, 930 के आसपास लो लगाया एंड पूरे दिन में वहां से फिर 100 पॉइंट का पुल बैक अपने ऊपर में देखा. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज सिंपली वर्किंग अमेजिंग, बट यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट करेक्टली. सो यहां पर आप रजिस्टर करिए. दिस इज एन एक्सक्लूसिव इनवाइट आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू हु आर हियर ऑन यूट्यूब. यू विल गेट अ जूम लिंक. कल का जो वेबिनार हम करेंगे वो जूम लिंक पे आपको उसकी इनवाइट मिलेगी. You will join on Zoom link, but ensure you are joining 10 minutes before the webinar starts, क्योंकि हम हाउसफुल हो रहे लास्ट काफी टाइम से and people are not able to join in the webinar on the Zoom. So ensure you are joining me on Zoom with this link which is shared across by my colleague, and you will simply love what we are going to do in that eye-opening session of 2 hours, which is on 11th March, which is Saturday, and that is tomorrow. So वो करिए ज्वाइन. उसके बारे में वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा. बहुत डिटेल में हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में. और क्या होता है दोस्तों, अगर आपने पहले भी अटेंड किया, बार बार अगर अटेंड कर रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर होते जाते. अगर आपने बुक एक बार पढ़ी हो, ऐसा हुआ है सेकेंड टाइम अगर आप वही बुक को पढ़ते हो तो कितना कुछ सीखने मिलता है. इनफैक्ट बुक छोड़ो, अगर आप मूवी भी देखते हो, आपने कोई मूवी देखी है, एक ही बार देखी है, लेकिन आप जब सेकेंड थर्ड टाइम वो मूवी देखते हो तो पता चलता है यार ये सीन तो मिस हो गया था. सो वही चीज है कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये कंटिन्यू करो. एंड गाइस, आई एम सिंपली thrilled to see so many of you attend these webinars, and it keeps me motivated enough to keep talking about it because I want to give away what I know as a knowledge, but I need people to learn about it. And by so many of you liking, sharing my channel and subscribers, it's really amazing to see कि यार लोगों को अभी भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए. मतलब इधर उधर की बात नहीं करनी है, क्वालिटी चाहिए जो सीधा बात करे क्या मार्केट में होने वाला है. और वो मैंने आपको बताया, टारगेट्स के साथ बताया, लेवल्स के साथ बताया,
कहां तक जाएगा, और साइंस के साथ बताया. दिस इज द साइंस ऑफ ट्रेडिंग. Along with that, I am talking about, and it's fantastic. So do ensure you join me tomorrow at 11 a.m. थोड़ा जल्दी आ जाना. I'm open for questions, so any questions, please. I'll be more than happy to answer your questions. Great to see all of you over here. Sharad, Vaibhav, Kalpesh, great to see you. Friday ka booster dose, thank you for that. Shalini, great to see you. You have not missed a single webinar. I am knowing that for sure. Deepak, fantastic to see you also here on the chat, comments, and every one of you. So fantastic to have so many of you over here commenting. So any questions, please. I'm open for questions. Any doubts, queries, feel free to ask me. और ट्विटर भी फॉलो करिए @kyal_ashish मेरा ट्विटर हैंडल है. So ensure you are following me there also, so that you are able to see how the market moves when the market is moving. That's very interesting. और एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि पता होना चाहिए कौन से एसेट को ट्रेड करना है. मैंने कल एक वीडियो बनाया था ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कि कैसे ऑप्शंस अगर आप बाय करके पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है और कैसे टाइम के साथ में आपको देखना है. ऑप्शंस चार्ट पे भी हम डायरेक्टली कल टाइम साइकिल अप्लाई करके देखेंगे कि क्या लग रहा है ऑप्शंस चार्ट पे, वो हम टाइम अप्लाई करके देखेंगे. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन हियर, ओएनजीसी व्यू विद टाइम साइकिल. अमित, अभी तो मेरे पास चार्ट ओपन करके उतना टाइम नहीं है बताने का. व्हाट कैन बी द लो ऑफ नेक्स्ट 2 months? वाओ, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यहाँ पर नेक्स्ट 2 months का जो लो निफ्टी पे बन सकता है वो मैंने ऑलरेडी पाथ अहेड बना रखा है, लेकिन आई डोंट वांट टू मेक यू नर्वस. ठीक है, आई थिंक वी माइट हैव मोर डाउनवर्ड मूव लेफ्ट. दिस कैन बी, यहाँ से एक ऊपर का मूव आएगा, एक पुश आएगा, लेकिन फिर बाद में जून 2023 तक हमें प्रेशर बना रहेगा ऐसा लग रहा है. क्यों जून 2023 तक, वो मैं कल आपको बताऊंगा. And there is a question here, can I join the mentorship if if I'm a no voice? Yes, of course. Why you can't join mentorship for that? क्योंकि mentorship जो program है हमारा, that is starting on 18th of March. Guys, by the way, next weekend Saturday को वो start हो रहा है, and it's all about how to start with risk management, how to go with money management, simple step-by-step process, how to look at chart, pure price action के basis पे. Then we combine with option trading program where we look at these volume profiles, open interest profile, detail में समझेंगे big players activity, Ichimoku cloud से combine करेंगे, KST indicator use करके, and then we move on further with concepts of time, and we take right from scratch, step-by-step process, live trading, algo trading, stock selection for momentum trading, multi-bagger portfolio stocks कैसे create करना है, all of those things we will do that. What's the 85-week cycle? कल बात करेंगे वैभव उसके बारे में डिटेल में. 11 बजे आप प्लीज ज्वाइन करना. 85-week साइकिल के बारे में मैं बात करूंगा, एंड वो साइकिल का क्या है और जून 2023 का डेट क्यों मैंने बताया आपको, वो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में. Firdaus is saying I bought one lot of Nifty call today at 175 premium. As I made 2000 today, I'm playing for a bounce back as the fall was 227.2%. That's a very interesting number. Firdaus, do share across your chart on my on the Mentees Telegram group. So वहां पर आप चार्ट शेयर करना. 227% कहाँ से मिला आपको वो मुझे देखना है. But yes, my path, if you have joined earlier, I've shown you the path that I'm expecting Nifty to travel, and precisely वैसा ही हुआ है जो हमने लास्ट फ्राइडे को डिस्कस किया था टिल डेट. एलियट में नियो में हिंदी में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है फिलहाल. हिंदी में भी करेंगे. हमारा एक प्रोग्राम है मास्टर ऑफ वेल्थ जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है. Great guys, then I think I've taken the time that was required. Thank you everyone for joining in. Do not forget people to join me tomorrow for that webinar on at 11 AM. So live है, Zoom लिंक मिलेगा, लिंक आपको शेयर कर दिए. और साथ ही में एक और चीज ध्यान रखना, मार्केट में ट्रेड करना है fearlessly. Don't worry if you see markets going down up and you are worried. क्या करे यार, क्या करे, अभी गैप डाउन हो गया, स्टॉप लॉस था, ये, and lot of things goes on, right? Your anxiety is not going to help you.
You need to ensure that you follow a system, a method. You need to have a mentor who is going to guide you step by step कि कहाँ आप wrong जा रहे हो, क्या सही करना चाहिए, बहुत जरूरी है लाइफ में. A mentor can be anyone that you believe is making sense, and your life journey is going to go skyrocket high. I'm telling you, because जो आप चीज सोच नहीं सकते वो simple way में mentor can tell you. That's how it is. That's how it works, and it is experience that counts. So बहुत सारी चीजें हम करेंगे, कल ज्यादा डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में. So आज के लिए इतना ही दोस्तों. Thank you very much for joining in. Do ensure you are subscribed to the channel. So जिससे मुझे पता चले, और लाइक करिए वीडियो को, तो I know you are liking these Friday live webinars and short videos जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ YouTube पे. Thank you. Have a wonderful day. Ashish Kyal signing off.